Chapter number 22, proud to be an Indian. Okay, so what is the name of our country? कौन बताएगा? It is name of our country. नव्या. बताओ. Yes, ma'am. What is name of our country? India. India. Correct. Name of our country, our nation is India. And do you know India is the 7th largest country in the world in terms of area. Area ke terms mein it is the 7th largest country in the world. And the population of our country is the second largest country in terms of population, 1.2 billion. What is the population? 1.2 billion. Okay. India is a large country with more than 1.2 billion people. First largest country in terms of population is China, and India is the second largest country with 1.2 billion of population. ठीक है? It is the 7th largest country in world in terms of area. Do you know India is also called as a diverse country? Why diverse country? Because diverse means variety, different type of religion. कौन कौन से रिलीजियंस हमारे कंट्री पे यू कैन सी, कौन कौन से रिलीजियंस आप जानते हो हमारे कंट्री में है, इंडिया में कौन कौन से रिलीजियंस आपने सुने हैं, देखे हैं? कौन बताएगा? डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजन इन आवर कंट्री इंडिया. गेस भव्या. Ma'am, Marathi, Gujarati, Jain, Christian, Brahman, and Okay, so Marathi, Gujarati, all this comes under Hindu. Okay, so Hindu, Buddhist, Sikh, Isai, Jaini, okay, Parsi, all these are the religion. So that's why India is called a very diverse country, because India have diverse religion. बहुत अलग-अलग type के religion हैं. Hindu, few people are Hindu, that comes under Hindu religion. Sikh, Punjabi, okay, Jaini. So there are diverse religion in our country, India. You can see in our country many different type of languages are also spoken. But the official language of our country, India, is Hindi and English. Okay, official languages Hindi and English. And do you know, children, 1,600 languages is spoken throughout the India. पूरे इंडिया में कितने languages हैं? 1,600 languages बोली जाती है हमारे कंट्री इंडिया में. But the official language is Hindi and English. Okay. In the same way, we have diverse variety of food. Food की भी बहुत सारी variety है. In north, if you will go towards north, there what is popular? Kulcha, naan, chole, puri. If you will go towards south, what is famous? साउथ इंडियन डिश किसी को पता है? सबने खाए जरूर है. एनीवन वांट्स टू टेल द नेम ऑफ साउथ इंडियन डिशेस? अदर? यस अपूर्व. यस अपूर्व. yes, ma'am. Ma'am, dosa, idli, chilli dosa, सांभर वड़ा. यस. All other dishes will find towards south, but it is eaten in all over India. पूरे इंडिया में खाई जाती है, but it is famous. It started, its origin is from south. Correct. So there is a diverse variety of food choice, diverse variety of dressing style. Like in men, they wear pant, shirt, pajama, kurta, dhoti. Correct. And female, they wear sari, suit, patialas, lehenga, choli. Okay. So there is a diverse variety of dressing styles also. Diverse variety of music, dance,
So that's why India is called a diverse country. And do you know India is the seventh largest country in terms of area, and our country is divided into how many states and union territories? कितने states और union territories में divided है? Our country India is divided into how many states and union territories? Yes, Shaurya. Ma'am, 29 states and 7 union territories. हाँ. So previously it was 29 states and 7 union territories, but now at present अभी के time में it is 28 states and 8 union territories. ठीक है? 29 states and 7 union territories is also correct, but it was previous. At present in 2020 it our country it divides into फिर से renew हुआ and now it is 28 states and 8 union territories. ठीक है? Clear? Our country India is divided into 28 states and 7 union territories. Children, do you know our country India is surrounded by, from 3 sides it is surrounded by water, and from towards north side it is surrounded from the mountains, hills. The tallest mountain in the world, the Himalaya, is situated to the north of India. India के north side में tallest mountain of the world. What is the name of the tallest mountain of the world? The Himalaya. Okay. And the highest peak of the world is also from India, that is Mount Everest, that is in Himalaya. Okay. The tallest mountain in the world is Himalayan mountain, that is situated in north of India, and the highest peak of the world is Mount Everest is in Himalaya. ठीक है? So north side our country, north side of our country, it is covered by mountains, and the 3 sides, that is west, east and south, it is covered by water bodies. The mighty Indian Ocean is to the south of India. South area of India, it is covered by Indian Ocean. ठीक है? If you will go towards south, what you will find? Indian Ocean, mighty Indian Ocean, very big, very large Indian Ocean. Toward west, what lies? It is Arabian Sea. You can see in the यहाँ पे आप, okay, wait a minute. In the map you can see towards south it is Indian Ocean. The name of the water body is Indian Ocean. Towards west is Arabian Sea, and toward east it is Bay of Bengal. ठीक? So 3 sides is covered by water, and towards north side it is covered by mountains and hills. And there are large number of rivers that flow in our country and that goes and join to this oceans. ठीक है? So name of our and this rivers, they supply water to the different area for irrigation, for drinking purpose. Okay. So some of the important rivers are Ganga, Yamuna, Satluj, these, Brahmaputra, Krishna, Kaveri, Godavari and Narmada. Do you know Ganga is the longest and largest river of our country, India? कौन सी है longest river? Weber, longest and largest river of our country? Yes, ma'am. Longest river. अभी मैंने बताया. Just now I told. Okay, भव्य बताओ. Weber सुनो अभी. भव्य बता रही है आंसर. Ma'am, Ganga. Ganga. So longest and largest river of our country, India, is Ganga. Okay. Narmada. Have you heard about river Narmada? कहाँ पे है? Where it is located? Where it is situated? कहाँ पे है?
इट इज इन एमपी, ठीक है, छत्तीसगढ़ एमपी के बॉर्डर पे है. रिवर नर्मदा इज ऑल्सो कॉल्ड लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश. इफ यू हैव हर्ड अबाउट टूरिस्ट प्लेस अमरकंटक, ठीक है. सो द स्टार्टिंग पॉइंट, द ओरिजिन ऑफ रिवर नर्मदा इज फ्रॉम मध्य प्रदेश, अमरकंटक. ओके. So there are a number of dense forests in our country. They are full of wildlife. Means forest में आप क्या क्या देखते हो, क्या क्या आपको देखने मिलता है forest में? Why so many of hand raised? Lower down your hand everyone first of all. Lower down your hand fast. Okay, good. So what do you mean by wildlife? Wildlife means wild animals, wild plants that are found in forest. So there are a number of dense forests in our country, and you can see a diverse variety of wildlife in this forest. Now let's talk about national symbols. After this, I'm going to send one link in chat box. Click on that link and you will get MCQ questions, and submit after completing that MCQ. Submit, last में submit option आएगा, you have to submit. Okay. So let's talk about national symbols of our country. So first national symbol is our national flag. Our national flag is also called Tiranga. It has three colors: saffron, white and green. And there is a blue veil in the center with 24 spikes. In white band, you can see here in white band, there is a blue wheel with 24 spikes. This wheel is, wheel कौन सा है? अशोक चक्र, अशोका चक्र. Okay. Next, so first national symbol is our national flag, Tiranga. Next is national emblem. Our national emblem, this is our national emblem with 3 lions visible in front and 4th lion is hidden at the back. Its lower ring, you can see here in picture, its lower ring contains, it has a horse and a bull separated by a wheel. बीच में एक wheel है. In one side there is a horse and in another side there is a bull. Okay. And below this emblem, what is written? Satyamev Jayate, means सत्य की जीत होती है always. Below this is written Satyamev Jayate in Devanagari script, which means truth alone trumps. Satyamev Jayate का क्या मतलब है? Truth alone trumps. Okay. So this is our second national symbol, that is national emblem. What national anthem? क्या है national anthem हमारे कंट्री का? कौन बताएगा? Raise your hand. Yes, Vaibhav. National anthem of our country. Yes, ma'am. National anthem of our country. Ma'am, Jana Ganan. Jana Gana Mana. Very good. कहाँ गाते हो आप national anthem? Ma'am, तिरंगा झंडा फहराते हम जब. Where? तिरंगा झंडा फहराते मैम जब गाते जनगण मन. And in school, in assembly गाते हैं? Yes, ma'am. याद है? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. National anthem Jana Gana Mana is Jana Gana Mana. It is written by Rabindranath Tagore. Our national song, name of our national song is Vande Mataram and it is written by Bankim Chand Chatterjee. Okay. Now, national flower, name of our national flower is lotus. National fruit is, what is our national fruit? Mango. National animal of our country India is Royal Bengal tiger. Okay. Royal Bengal tiger is our national animal. National bird is peacock.
Anyone knows national game? It is not given in your book. National game क्या है हमारे कंट्री का? Yes, Samiksha. Ma'am, hockey. Hockey. Very good. National game of our country India is hockey. Okay. Now let's talk about neighboring countries that are जो इंडिया के आसपास है. The neighboring countries of India are China and Nepal on the north. North side पे कौन सी countries है? Neighboring country of of India in north side is China and Nepal. Bhutan, Bangladesh and Myanmar on the east. Pakistan on the west and Sri Lanka on the south. ठीक है, मीन्स चारों साइड पे हमारे डिफरेंट कंट्रीज है, नेबरिंग कंट्रीज है. सो नॉर्थ पे कौन कौन सी है? चाइना एंड नेपाल. And in east toward it is surrounded by Bhutan, Bangladesh and Myanmar. Towards west, our neighboring country is Pakistan, and towards south it is Sri Lanka. Okay. So now I will send the link. Everyone be ready with आप अपना गूगल अकाउंट साइन इन करके रखो. अगर आपके पास गूगल अकाउंट नहीं है तो फिर यू विल नॉट एबल टू गिव. ठीक है, जैसे आपने सब्जेक्ट एनरिचमेंट टेस्ट दिया था गूगल अकाउंट से साइन इन करके, वैसे ही आपको अभी मैं लिंक भेजूंगी, उस पर क्लिक करके10 MCQ questions are there. First, you have to click on the link and you have to write your name also. ठीक? Yes. So here is the link. I've sent the link. Click on the link and start giving the test, revision test. उस लिंक पे क्लिक करो. Everyone got? Everyone got the link? Click on the link. Yes, Apurva. नो मैम मेरा हो गया ना. मैं कॉपी करना नहीं आता ना, बट मेरे से हो गया अभी. कॉपी हो गया कर रहा हूँ अभी. Okay. Yes, Dakshita. मैम मेरे पास लिंक नहीं आया है. बॉक्स में भेजा है बेटा, चेक. ओपन योर चैट बॉक्स. नॉट देयर, नॉट इन मोबाइल. अभी क्लास में जो आपका है जूम का चैट बॉक्स, उसमें ओपन करके देखो. मैम मेरा ना लैपटॉप में मेरे को गूगल ईमेल का नहीं पता, इसलिए मैम मेरे को मोबाइल चालू की है.
मैम मोबाइल में नहीं आया। अरे वो चैट बॉक्स में ही आएगा ना, मोबाइल में भी तो चैट बॉक्स में आएगा। आपको लैपटॉप में अभी आप जो क्लास में ज्वाइन किए हो उसके चैट बॉक्स में आएगा। ओपन करके देखो पहले। यस निश्चय। मैम नहीं आया है। मैम मैम नहीं आया है। मैम एक बार वापस लिंक भेजो ना। हाँ मैम यस यस आई आज एम बंद हो गई तो यस आई एम लिंक चले गए। I've sent it again. Check. What happened, Samiksha? मैम मेरा वो हो ही नहीं रहा मैम। मैं उसमें कर रही हूँ तो हिंदी में कुछ प्रवेश करे करके कुछ आ रहा है। हाँ, because आपको Gmail अकाउंट साइन करना पड़ेगा तभी आपको। मैम मैं अपने स्कूल का पासवर्ड डाल दूँ? नहीं बेटा, Gmail अकाउंट आपका या आपकी मम्मी का या छोटे भाई का, बड़े भाई का, पापा का, किसी का Gmail अकाउंट होगा, उससे साइन इन करके आपको देना है। लाइक सब्जेक्ट एनरिचमेंट ओके दिया था। ओके मैम। यस वैभव। Anyone finished? Yes, Ronak. मैम मैम मेरा एग्जाम फिनिश हो गया है। हाँ, how much? मैम 6। Why? क्यों है इतना काम बेटा? अभी अभी हमने जो रिवीजन किया उसी के बेसिस पे सारे क्वेश्चंस हैं। यस काव्या। मैम 9। 9 ओके। Okay, I got from Kavya, Ronak, Vaibhav, both Vaibhav and Apurva. Everyone quickly do it so that we can discuss the paper. हम उसे discuss भी कर पाएंगे। जल्दी जल्दी करो। Click on the link. भव्या। Total 16 students are there. Arush, Apurva, Bhavya, Dakshita joined 2 times. Okay. 80. I got only 5 response. निश्चय, आपका गाथा के नाम से भी अकाउंट दिखा रहा है एंड निश्चय के नाम से भी अकाउंट दिखा रहा है भाई। यस निश्चय। क्योंकि मैम मेरे मोबाइल में मैम खुल नहीं रहा, तो मैम आप वापस लिंक भेज दोगे क्या? मैम मोबाइल में खुल ही नहीं रहा है। आपका यहाँ पे गाथा क्यों शो कर रहा है? You have joined class through गाथा's portal. गाथा नो मैम। तो आपका यहाँ पे गाथा क्यों शो कर रहा है? गाथा 761। मैम you can link. Yes, I am sending the link again. Done everyone? Only 10 minutes left. Do it fast.
Bhavya, done? I got 7 responses from Dhanvi and Bhavya also. Dakshita also done. Okay, so Nishchay, Kashvi, Samiksha, Shaurya, Navya, Dhairya and Arush. बस आप ही बच्चे हो बेटा, डू इट फास्ट. Navya is also given. Arush, what happened? हुआ आज कि आज भी नहीं हुआ? नो मैम, वो हुआ था लेकिन नेटवर्क चला गया था, इसलिए मैम वो स्किप हो गया. Okay, I've sent the link again. Start again. Okay, so no, अब आप जाओगे. You won't be okay, because one time you attended one time only. You have attended first. यस मैम. You have attended first time. आपने एक बार दे दिया. नो मैम, ठीक है. पिछली बार भी नहीं हुआ था. लिंक करो. Sorry, what happened? Shaurya, done? Yes, ma'am. हो गया? आपने दिया टेस्ट? आपका नाम यहाँ शो नहीं कर रहा है. Have you solved this MCQ questions? मैम मैं बस डाल रहा हूँ. Okay. मैं बस डाल. Okay, okay. 7 minutes. Yes, Zakira. Ma'am, I completed and I got 10 out of 10. Very good. Very good. Yes, Nishchay. Ma'am, I 9 out of 10. 10 out of 10. Yes, ma'am. Okay, very good. Ma'am, I have also done. You also got? Shaurya and Nishchay, have you submitted? Because यहाँ पे आपका नाम शो नहीं कर रहा है. Have you submitted? Last में submit किया? Shaurya, Yes, ma'am. submit किया, फिर marks, total number of marks भी show किए? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही. Submit करने के बाद total number of marks show किए क्या? Yes, ma'am. Only Arush, Kashvi and Samiksha and Dhairya. And 5 minutes left, beta. 5 minutes mein you have to finish. Arush, Samiksha, Dhairya and Kashvi. What happened, Samiksha? मैम मेरा वो हो ही नहीं रहा है. कि मम्मी आपके में जी नहीं. नहीं. अच्छा हाँ ये. मैम वो हो ही नहीं रहा है. Wait.
Yes, Kashmi. बेटा एक मैसेज आया होगा, उसके ऊपर क्लिक करो काशवी। मैम एक्चुअली मैम मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या करना है। चैट बॉक्स ओपन करो, जूम में चैट बॉक्स है ना आपका। यू आर यूजिंग मैम कहाँ पे है? ये चैट लैपटॉप और मोबाइल। मैम अब क्या करना है? उसमें लिंक आया है, उसके ऊपर क्लिक करना है। लिंक के ऊपर क्लिक कर। यस मैम हो गया, लेकिन मैम उस नहीं आ रहा है। क्वेश्चंस दिए। साइन इन। साइन इन। हाँ, साइन इन क्वेश्चन मैम आपका या आपके मम्मी का, पापा मैम का, भाई का, किसी का जीमेल अकाउंट होगा, वो जीमेल अकाउंट से साइन इन करो। जीमेल। एक मिनट ना मैम, 1 मिनट। यस यस आरुष। Ma'am, I got 10 out of 9. 10 out of 9, 9 out of 10. Okay, very good. Ma'am, 9 out of एक मार्क्स किस में कटे? क्वेश्चन नंबर 1। Yes, ma'am. हाँ, so question number 1 is India is famous for dash all over the world. सबसे ज्यादा क्या मिलते हैं इंडिया? आंसर इज स्पाइसेस। Ma'am, spices. यस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सारी चीजें Ma'am, कंट्रीज में भी मिलती हैं, बट स्पाइसेस, इंडिया इज फेमस फॉर स्पाइसेस। ओके, क्लॉथ्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स okay, ma'am. कंट्रीज में भी मिलती हैं, बट इंडिया इज फेमस फॉर स्पाइसेस। Okay, ma'am. Only 2 minutes left. Yes, Samiksha. Kashmi done? Okay, do it. Only 1 minute left. Only 1 minute left. Yes, Dakshita. मैम मेरा सब सही हुआ। हाँ, okay, very good. Yes, Samiksha. Nothing, ma'am. Ma'am, I got 10. Ma'am, 9 out of 10. 9 out of 10. Where 1 marks deducted? I'm telling. Ma'am, in the third question. Third question. What is third question? Yes, ma'am. The ring at the base of our national emblem shows. हाँ, it shows. अभी हमने रिवाइज किया था. It shows Yes, ma'am. a bull and a will in between. Okay, ma'am. And in one side there is a horse, and in another side there is a bull. Okay. Only 1 minute left. Kashmi done? Less than 1 minute left. Yes, Samiksha. Everyone finished their test?